Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with a derivative and technical update. Friday Nifty witnesses some profit booking and made a low of 18,209 levels. But the last hour's buying led index to the close about 18,300 levels. And if we see on the sectorial front, Friday PSU Bank was the top gainer, while other sector witnessed a profit booking and closed in the red. On the daily chart, Friday index broke the 11th November gap level, but still majority of the gap level is not filled. So now the strong support level at 18,100 level, and if Nifty sustain above and close around 18,600 levels, which is the all-time high levels, then upside can be possible. So for the next few weeks, 18,100 and 18,800 range can be possible for the Nifty. On the Bank Nifty front, Bank Nifty continue trade in the uptrend. So, and if you see on the daily chart, Bank Nifty, it is trading above the breakout levels of 41,840 levels. So now the view for the this week is a bullish. So 42,000 and 41,500 will be the strong support levels for the Bank Nifty, and resistance will act as a 44,000 levels. On the derivative front, if we see Nifty future witnessed a long unwinding of around minus 3.05%, which is a reduction of minus 4.3 lakh shares. TCR also dropped further 0.89 from 0.98 levels. So major addition seen in the Nifty at 18,400 call option by 10.56 million shares and 18,500 call by 76.90 million shares. And on the put option front, 18,000 put reduction by the 64.39 million shares and 18,300 put by 68.53 million shares. And if we see on the Bank Nifty front, Bank Nifty added a short position of around 1.46%, which is the addition of around 43,000 shares. And TCR of the Bank Nifty ratio dropped from 1.12 to 0.092 levels. So major addition were seen at Bank Nifty at 42,500 call, 38.14 million shares, and 42,000 put option front by 18.24 million shares. So long build-up seen at IGL and MFSL and GAIL, and short build-up were seen at ONGC, Polycab and PVR. So that's it from mine. Now I will hand over to Vishal sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Yeah, good morning. Good morning, sir. Good morning, team. So a couple of updates. First, starting on the steel and metal industry. So government has withdrawn the export duty, which it levied in the month of May. If you recall, in the month of May, government has levied export duty of around 15% on steel export and around 50% on iron ore. However, in this time, they have withdrawn the export duty, which was of 15% on steel export. And if you look at, this is sentimentally positive for all the metal stock. Though I mean, metal stock, they have been buzzing in the market, so we have to see how exactly they pans out in today's session. But one thing is there, I mean, government is giving a filler that inflation is coming under control, and that's why all these things are happening. But one thing that we have noticed is domestic prices are not premium to what the export pricing is. And if that is the scenario, then eventually if the export duty is, even if it's removed, it's not fundamentally it's not that much positive. But yes, I think stock reaction can be there in terms of this news flow, which was severely seen as a regulatory overhang on many of the metal stock in the last around 6 odd months when this thing was levied. Next is on media. So Drishyam 2 has had a pretty strong start, and it earned around 37 odd crores in the first 2 odd days. So if you look at after Brahmastra, this movie has seen the highest opening, and such a strong performance is expected to bring back the audience to watch Hindi movies, which has failed to perform in the last quarters. From a stock specific point of view, this is positive and bodes well for PVR and MOX, and strong performance will lead to increase in the overall footfall. Currently, we are buy rating on both the stocks with the target price of 2,100 on PVR, and on INOX is 630. Next is on
Cyient, we have attended analyst meet, and we maintain our buy rating on the stock with a target price of 914. Overall, the key highlight in the analyst meet is like company is focusing on 5 pillars. So overall, I mean, like, company has given its strategy, how exactly they see in terms of like, this business moving towards in the next midterm, which is like around 3 to 4 odd years. The key highlight was like, company is focusing on 5 pillars, namely digital, network, geospatial, embedded, and VLSI. Company won around $530 million deal, large deal in the first half, and has large deal pipeline of $101 billion. As a result, company has reiterated its guidance of around 33 to 35% on YoY basis, and the company has guided to have a $1 billion revenue run rate in FY24, and which is I mean, like, in terms of segment wise, healthcare, communication, automotive is expected to do well, and expect rail and utility to do well in the second half of this year. So we are retaining a positive view and buy rating on the stock with a target price of 914 on Cyient. Next is on IX. So IEX has board has announced a share buyback, and overall this is positive. I mean, look at stock has been weak, and overall the multiple contraction has been there vis-a-vis the fundamental overall performance, because volume growth in the power sector has been pretty good. So overall, I mean, this is a positive development on IEX. Next is on continuing with the metal. So I mean, like, one update which has been there, like, in terms of the announcement by the finance ministry on the removal of this export duty. They have again what they have mentioned, like, import duty on coking coal and ferro nickel will be 2.5%, and on coke and semi coke, which is around 5% odd. These were given exemption in May. Now incrementally they have increased the prices of the coking coal if you're importing in the country. So this is sentimentally negative for the cement industry, because they are a major importer of coking coal for their consumption. And then next thing from my side is on Maruti. So Maruti has launched an Alto K10 CNG with a price of around 5.95 lakh, which is ex-showroom. With this, the country largest automaker has total like 13 CNG models in the portfolio, and couple of models include 13 CNG models include like, Alto, Espresso, Eco, Celerio, Swift, Desire, and a couple of others. I mean, like, if you look at the way the crude prices, they have been increasing, the CNG demand has been pretty strong in the market. So company is Maruti Suzuki is trying to launch models, and this is positive for the stock in terms of like, giving enhancing its broad offering to the market in India. And last thing from my side is like, on a broadcasting, so ad revenue of a broadcasting company like Z and Sun TV has observed a slowdown. And in the gone by quarter, Sun TV ad revenue remained flat on YoY basis, and G saw a 7% YoY decline. The reason for the fall in the ad revenue is due to the cut in the advertisement spent by FMCG company, which form around 50 to 60% of the total ad revenue. We believe as the input cost pressure eases out for FMCG company, they will again start investing in advertisements. However, there's no clarity as what will happen, but I mean, like, overall, the decline which has been there, it is overall negative development for the broadcasting players, which includes the Z and Sun TV. We don't have a rating, but overall, the development has been negative on them. Yeah, so that's all from my side, and I'll hand it over to Sir now. Good morning, everyone. Few more news updates from my end. So, as per the data, the Reserve Bank of India has estimated to have bought nearly 8 billion from the market in less than a month. This is basically for the boosting for the foreign currencies and enhancing their rupee liquidity as much as rupees 67,000 crores since Diwali week. So this is one data. Next is on Future Enterprises Limited. On Thursday, Future Enterprises updated that they are defaulted on a payment of interest on non-convertible debentures of rupees 1.07 crores. Third is on DSP Investment Managers. They will be buying nearly 10% stake in Equitas Small Finance Bank for an undisclosed amount. This is subject to the approval from the RBI. Fourth is on Blackstone Group. So they are agreed to invest nearly $359 million, which is equivalent to rupees 2904 crores, to take a majority of stake in R System International from its existing promoters.
And lastly, one update on GHCL. A company has entered in, which is they are having an interest in soda ash and textile, and they are willing to set up 3,500 crores greenfield manufacturing facility in Gujarat. So this the company which is having a headquarters in Delhi is also setting up 0.5 million metric ton per annum, which is around a capacity of it's a capacity, and which is across the 1,000 acres of land near coastal Mandvi town of Kutch district. This is means informed by the managing director R.S. Jala. So this was a updates from the GSL. So that's all from my end. I will hand over to Prabhakar sir for more research updates. Thank you. Good morning, team. Government has extended tenure of public sector banks, MD and CEO to 10 years. This rule also applies to whole-time directors for central public sector enterprises. This is very positive. Previously, it was 5-year term, and previous PSU's non-performance was MD and CEO were given the last 6 months or 1 year of their retirement, and they never had a long-lasting term. But this has changed in the last 4-5 years, where we saw NTPC, Cochin Shipyard, and SAIL having 5-year MD term, but 5 year is a maximum. But now they want younger MDs, and 10-year term will enhance their value to the company, and they'll be more responsible, like private banks, where 2 5-year terms private bank MDs are having. So something like that, if it happens, it will make them more accountable, and that is very positive for PSU banks. So, and already we remain very positive on this segment. Tata Motor would replace Dr. Reddy's lab in Sensex 30 share from December 19, 2022, as per Asia Index Private Limited. S&P BSE 100 also, Adani Total Gas and Hindustan Petroleum, they will be replaced by Adani Power and Indian Hotel. Indian Forex Reserve surged by $14 billion to $544 billion. This is the steepest rise since August 2021. Winter session of the Parliament would commence from 7th December till 29th December, and the budgets and very soon budget session also will follow. And there is one more news that Finance Ministry will be preparing for pre-budget roadshows. Aarti Industries and Deepak Fertilizer, they sign a binding agreement for long-term supply of nitric acid. Almost the binding agreement is for 20 years, and approximate offtake should be around 8,000 crores. So if I divide by 20, at least 400 crores would be approximate. And Deepak Fertilizer would supply, and Aarti Industries would take the delivery. Aarti Industry has been facing a lot of volatility in nitric acid. So that is why this agreement has taken place, and that is very positive for even Deepak Fertilizer. EPFO adds 16.82 lakh accounts in September 2022, said Labour Ministry, which is a 9.14% increase in the net membership. That means a lot of new labor system is added. RHI Magnesia to acquire DBRL's refractory business for 1,708 crores. DBRL is Dalmia Bharat Refractory, and RHI Magnesia is an Austria company. It is a MNC company. The company has been there for more than 150 years. Ease My Trip GBR gross booking revenue is now 1,977 crores, which is the highest ever in any quarter. Revenue is 108 crores, higher by 91%. EBITDA margin is 35.9%. Profit after tax rises marginally at 28 crores. There was an interview of NHPC management in CNBC. So I've taken few data. This stocks looks very good to us.
So that is why, you know, I took a few notes on NHPC. NHPC says solar and renewable energy will be listed in next 3 years time. And when they list, they will have 1000 megawatt of solar capacity alone. And, in hydroelectric, almost 8,000 megawatt of projects are under various construction, and this capacity, 8 projects are there, and this capacity will double by FY26 is what the management said. We are very positive on NHPC. It trades at 11 times trailing EPS. So this stocks look good now, with green energy being the global focus. In the last news, Engineers India has been awarded job by Chennai Petroleum Corporation for overall project management and EPCM thing. So revamp and offsite facility, everything in Manali Refinery, Chennai. So, but the amount of the contract has not been given, but it is positive for Engineers India. But we don't track the stock. We are very positive on RHI, Magnesia, NHBC in this total list. And in the last news, one more news is there. CDSL stock to be in focus after malware attack on its system where many data has been compromised. With that, over to you, Hitendra. Hitendra, we are not able to hear you. Yeah, good morning everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट के पीएसयू टेन्योर के साथ. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो भी पीएसयू के बैंक्स के जो टेन्योर है वो 10 इयर्स कर दिए एमडी एंड सीईओ के, और ये रहेंगे जिसके जो होल टाइम डायरेक्टर्स है जो सेंट्रल बैंक के पीएससीज के, उसके भी उन्होंने टेन्योर इंक्रीज कर दिए. तो ये बहुत ही पॉजिटिव है. अर्लियर ये पहले 5 साल ही होता था, उसमें जो लास्ट 6 महीने 1 साल जब उनके रिटायरमेंट के आसपास होते थे तो वो थोड़ी सी अड़चने अटकलें बनती थी, बट ये अभी अड़चने निकल जाएगी. एनटीपीसी कोचिन शिपयार्ड जैसे जिनके भी एमडीसी है वो 5 ईयर्स के टेन्योर उन्होंने पास किया है. सो अभी वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और मोर अकाउंटेबल रहेंगे. ये सब ओवरऑल के पॉजिटिव है सेंटिमेंटली स्टॉक्स के लिए भी, और वैसे भी पीएसयू स्टॉक्स पे बुलिश है. सेकेंडली टाटा मोटर्स ने कहा है कि टाटा मोटर्स रिप्लेस करेगा डॉक्टर रेड्डी को सेंसेक्स में दिसंबर 19 को, और अडानी टोटल गैस और एचवीसीएल रिप्लेस करेगा अडानी पावर को. थर्ड देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए हैं $14 बिलियन से, जो कि 544 बिलियन से अगस्त 21 से. सो हम देख रहे हैं फॉरेक्स सिटी भी अच्छे से बढ़ रही है. विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, और प्री बजट जो उसकी रोड शोज भी होने वाले हैं, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा. आरती इंडस्ट्रीज और दीपक फर्टिलाइजर्स ने कहा कि जो नाइट्रिक एसिड उन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है, 20 इयर्स का ये एग्रीमेंट रहेगा, और इसकी अमाउंट है वो 8,000 करोड़ की है. इससे देख रहे जा रहे तो आरती इंडस्ट्रीज को बहुत नाइट्रिक एसिड के चलते वॉलेटिलिटी फेस करनी मिले, और एक ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज है स्टॉक के लिए, आरती इंडस्ट्रीज के लिए. बेसिकली आरती इंडस्ट्री दीपक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करेगा और आरती इंडस्ट्रीज उसे सप्लाई करेगी. गवर्नमेंट डेटा ने कहा कि ईपीएफओ के जो अकाउंट्स है वो इस बार 16.82 लाख अकाउंट नए अकाउंट्स ओपन हुए सितंबर 22 में. तो टोटल देखा जाए तो 9.1% है. तो देख रहे हैं मेंबरशिप और न्यू लेबर सिस्टम्स ये ऐड हो रहे हैं, तो ओवरऑल लेके बेटर है. आरएचआई मैग्नीशिया जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड फर्म है, और डीबीआरएल जो कि डालमिया भारत की रिफैक्ट्री फर्म है, वो से बाय करने वाली है. 8,000 करोड़ का बिजनेस है. आरएचआई मैग्नीशिया देखा जाए तो 150 ईयर ओल्ड बेस्ड कंपनी है. ईस्माइल ड्रिप की भी हम देख रहे तो ग्रॉस बुकिंग वैल्यू देखा जाए तो 1097 करोड़ के आसपास की है. इनकी रेवेन्यू देखा जाए तो 108 करोड़ की थी. एबिटा देखा जाए तो 38% के आसपास था, और पैट फ्लैटिश था 28 करोड़ के आसपास का. एनएचपीसी के मैनेजमेंट सीएनबीसी पे आए थे, तो हमें उसमें से कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे, तो हम स्टॉक पे भी बुलिश है. तो बेसिकली देखा जाए तो सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो इससे लिस्ट करना चाहते हैं. और अगर हम देख रहे हैं जब वो लिस्ट करने जाएंगे तो सोलार अकेला 1000 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट सप्लाई करेगा, और हाइड्रोलिटिक का जो है वो 8000 मेगावाट्स का रहेगा. और अंडर वेरियस भी देख रहे हैं तो 2x तक उसकी वो कैपेसिटी ग्रो कर सकते हैं. और अभी हम ईपीएस वाइज देख रहे हैं तो 11x का ट्रेडिंग ईपीएस पे ट्रेल हो रहा है. जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है उसको चेन्नई पेट्रो से एक ऑर्डर मिला है फॉर बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ईपीसी कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि इनकी मनाली रिफाइनरी है. अमाउंट जो है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है.
सीडीएसएल पे एक मालवार अटैक हुआ था, सो इसमें बहुत सारे डेटा कॉम्प्रोमाइज हुए थे, सो एक ये नेगेटिव न्यूज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्व बैंक ने कहा है कि उन्होंने मोर देन $8 बिलियन का बाय आउट किया है लेस देन अ मंथ में, और ये देख रहे तो फॉरेन करेंसी को बूस्ट कर रहा है, और जो हमें लिक्विडिटी में जो करंट था उसमें 67,000 करोड़ का आसपास का इसमें बूस्ट मिला है लिक्विडिटी को। सेकेंड हम देखेंगे डेट रिटर्न जो एफईएल है, जो कि फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड है, उसने डिफॉल्ट किया है पेमेंट का, जो कि एनसीडीज पे है, जो कि 1.07 करोड़ का है। डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स बाय करेंगे नियर अबाउट 10% स्टेक इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। अमाउंट जो है वो कि डिस्क्लोज नहीं गई है, और अभी इसमें से आरबीआई का भी अप्रूवल पेंडिंग है। यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म जो ब्लैकस्टोन है, उन्होंने अग्री किया है $359 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि 3,000 करोड़ के आसपास का है, और ये मेजोरिटी स्टेक बाय करेंगे आर सिस्टम इंटरनेशनल के लिए, जो कि इनके एक्सिस्टिंग प्रमोटर्स से है। जीएससीएल ने कहा है कि उनका इंटरेस्ट है सोडा ऐश और टेक्सटाइल बिजनेस सेटअप करने के लिए, और उसमें से वो 3,500 करोड़ का ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि गुजरात में है उसे सेटअप करेंगे। और बेसिकली इसमें से जो 0.5 मिलियन जो मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी का प्लांट अक्रॉस 1,000 एकड़ लैंड वो मांडवी एरिया जो कि कच्छ गुजरात में सेटअप करेंगे, ऐसा उनके सीएमडी ने कहा था। ओवरऑल देखेंगे वीकेंड पे स्टील सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बोल सकते हैं हम कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उससे निकाल दिया गया है, और ये जो ड्यूटी है जो बीए में लगाई गई थी उसके चलते हम देख रहे थे जो कि एक्सपोर्ट ड्यूटी पे चार्जेस जो कि 15% था स्टील एक्सपोर्ट्स के अराउंड, जो कि 50% था आयरन ओर के लिए। सो हम देख रहे डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस मार्केट में भी हम गिरते हुए देख ही रहे थे, सेंटीमेंट वाइज बहुत अच्छी है, डोमेस्टिक प्राइसेस अभी भी प्रीमियम चल रहे एक्सपोर्ट के, तो इतना कोई बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट होते नहीं दिखेगा, बट सेंटिमेंटली एक हमें थोड़ा सा स्टॉक्स में अपटिक आते हुए दिख सकता है। आईएक्स है, उन्होंने एक अनाउंस किया है शेयर बायबैक, और ओवरऑल के पॉजिटिव न्यूज है आईएक्स के लिए। इसी के साथ चलते हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी एंथ्रासाइट पीसीआई पे और कोकिंग कोल पे और फेरेनिकोल पे वो भी 2.5% रहेगी, और जो कि इसमें से 5% ऑफ कोक और सेमी कोक पे रहेगी, जो कि पहले एग्जम्पशन गया था मे के लिए। सो ओवरऑल की सेंटिमेंटली नेगेटिव रहेगी सीमेंट स्पेस में। मारुति ने कहा है कि वो एक लॉन्च करने वाली है ऑल्टो की K10 सीएनजी, जो कि 6 लाख के एक शोरूम प्राइस के साथ लॉन्च होने वाली है। इसके साथ देख रहे तो मारुति के पास अभी टोटल 13 सीएनजी मॉडल्स है, जिसमें से टॉप देखा जाए तो एस्प्रेसो हो गया, स्विफ्ट हो गया, अर्टिगा, बलिनो, एक्सेल 6, सुपर कैरी और बहुत सारी है। सो इसमें से ओवरऑल एक ही देख रहे हैं जैसे क्रूरल के प्राइसेस राइज कर रहे हैं, तो मारुति इस सेगमेंट में फोकस करना चाहती है, तो ओवरऑल एक ही मारुति के लिए पॉजिटिव न्यूज है। हमने कल साइन के एनालिस्ट मीट अटेंड किया था, उसकी जो की हाइलाइट्स है कंपनी फोकस करने वाली अपनी 5 पिलर्स पे, बेसिकली डिजिटल नेटवर्क, जियो स्पेशियल, एम्बेडेड और वीएलएसए सेगमेंट पे। इससे वो एक्सेड करेंगे जो कि मेगा ट्रेंड से करने 20% जो उनका रेवेन्यू आता है आउट ऑफ 50% के लिए। कंपनी ने इसमें $550 मिलियन का लार्ज डील भी विन किया है, और लार्ज डील अलग से अलग पाइपलाइन में देख रहे तो $8 बिलियन का है। इसके चलते कंपनी ने कहा कि जो उनकी गाइडेंस है वो 33 to 35% तक वो मेंटेन करेंगे ईयर ऑन ईयर पे FY23 के, इसमें एक्विजिशन भी कर सकते हैं। और उन्होंने जो कहा ये रन रेट जो $1 बिलियन का रेवेन्यू है वो FY24 के लिए भी रख सकते हैं। सो टोटल देखे जाए तो 60 रुपीज पर शेयर का ईपीएस बन जाता है हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, ऑटोमोटिव से एक्सपेक्टेशन उनको आने के लिए। सो ओवरऑल मार्जिन गाइडेंस 15% का हमें लगता है अच्छा रहेगा, इसमें से बेसिकली ऑटोमेशन, प्राइसिंग और यूटिलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो भी ग्रो हो सकती है। तो करेंटली हमें इसके ऊपर बाय रेटिंग है 15x के रेवेन्यू के साथ देखे जाए तो 914 के प्राइस टारगेट के साथ। और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की एक न्यूज़ है जो कि एक नेगेटिव या साइडली हम बोल सकते हैं कि एड रेवेन्यू जो है वो की करती हुई दिख रही है जी और सन टीवी के लिए, और स्लो डाउन हो चुकी है। सन टीवी की देख रहे तो फ्लैट थी, जबकि जी की हम देख रहे 7% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दिख रही है। बेसिकली इसका रीजन है कि जो एफएमसीजी ने जो कट किया है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के, जो कि उनके 50 to 60% रेवेन्यूज वहां से टोटल आता था, क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर ईज होने के चलते एफएमसीजी कंपनीज ने अभी हमें लगता है कि वापस से स्टार्ट कर सकती है अपना एडवर्टाइजमेंट्स, और इनका बजट्स भी यहाँ से हमें लगता है आगे जा सकता है। सो ओवरऑल क्लैरिटी या नेगेटिव, मतलब क्लैरिटी तो नहीं है बट नेगेटिव डेवलपमेंट रह सकती है ब्रॉडकास्टिंग प्लेस के लिए। लास्ट न्यूज़ है इसी मीडिया स्पेस में पीवीआर आइनॉक्स की हम देख रहे हैं जो दृश्यम 2 की स्ट्रॉन्ग बुकिंग दिखी गई है, और बहुत टाइम के बाद ब्रह्मास्त्र के बाद हमें ऐसी ओपनिंग दिखेगी। टोटल 37 करोड़ से इन्होंने जुटाया है 2 दिन में। सो हमें लगता है कि ओवरऑल एक सेंटिमेंटली अच्छा रहेगा पीवीआर आइनॉक्स के लिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर देखा गया था बहुत ही एकदम फ्लैटिश था, और कोई भी बॉलीवुड मूवीज इतनी अच्छी खासी चल रही, तो एक थोड़ा सा इसमें पॉजिटिविटी करंटली इसके बाद हमारी बाय रेटिंग है 2100 एंड 3630 के प्राइस टारगेट के साथ।
So thank you everyone for attending the morning con call. You may now disconnect.